कौन सा पोटैटो था स्प्रिंग सो हियर इज अ स्प्रिंग पोटैटो एंड कॉफी இது வந்து சாம்பார் ओके देख के मुंह में पानी आ रहा है हाय गाइस दिस इज योर ट्रैवल पार्टनर ज्योति मल्होत्रा एंड हम हैं आज मद्रास में इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी वेयर यू कैन एक्सप्लोर मेनी थिंग्स लाइक मार्केट्स शॉपिंग फूड सबसे पहले मिली स्पन्ना से हाय स्पन्ना हाउ आर यू I'm good, thank you. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस हियर वी आर गोइंग फॉर टी नगर और टी नगर में हम सबसे पहले भूख लगी है तो कुछ खा लिया जाए स्टार्ट करते हैं डे को मुरुगन इडली जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस और डिलीशियस इडली है लॉट ऑफ वैरायटीज यू कैन गेट देयर कितनी सारी If you're coming to Chennai, Murugan Idli shop is must visit place. If you're really love to eat South Indian traditional vegetarian cuisine, yes. Finally हम पहुँच गए हैं मुरुगन इडली में। ये है एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल शॉप है। वैसे तो मुरुगन इडली के नाम से आपको बहुत से स्टोर और शॉप्स मिलेंगी बट ये जो है ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको प्योर ऑथेंटिक टेस्ट मिलने वाला है। ये कितने टाइम से है रेस्टोरेंट? More than 80 years. 80 years. Excited हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, so let's go inside. So yours is yellow and ours is green. Sprinkle कर लो लीफ में, अभी कर लो। ऐसे साफ करना है लीफ में। थोड़ा सा पानी लेके ऐसे। Enough? So eating in banana leaf is having some special features because it is very healthy to eat and we get so many organic things if we eat in here than the steel plates or aluminium plate. It is very organic and we're going to basic roots and this is a traditional way of Tamil Nadu South Indian thali. How we eat South Indian thali. ये rice, papad, sweet, पायस and puri idli. Okay. की पूरी इडली है This kothumali coriander chutney and mint chutney. कोत्तुमने कोरिएंडर चटनी Coconut chutney. तो नहीं ऐसे भी नहीं खाई जाएगी चना बनाना wow have to make space for sambar here okay देख के ही मुंह में पानी आ रहा है just waiting for my sambar so I will start eating sambar wow मतलब आज़ादी के एक साल बाद से इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो लोकेशन है ये बिल्कुल मेन बाज़ार में है यहाँ पे सामने इधर मस्जिद है मस्जिद है सईदा रोड और यहाँ पे हम साउथ इंडियन डेलिकेसी ऑर्डर करने वाले हैं देखते हैं क्या क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं विल फाइंड आउट द मेन्यू दिस इज़ द नॉन एसी पार्ट और अगर हमें एसी हॉल बैठना है तो अंदर एसी हॉल भी है सो विल गो इनसाइड क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिड है एज यू नो कि चेन्नई का टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड रहता है बस मतलब अच्छा है ठंडा है प्लेजेंट है यू कैन से तो अंदर एसी में थोड़ा सा खाते हैं इट्स ऑलरेडी लंच टाइम हियर इज आवर ऑर्डर इडली सांबर एंड डोसा Wow, this is the sambar. In Rathna cafe, you must have to order this idli sambar. ये मतलब एक स्पेशलिटी है यहाँ की जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और नॉर्थ इंडिया में तो आपको कभी नहीं मिलने वाली बहुत ही मतलब डिलीशियस ही फ्रेगनेंस आ रही है करी पत्ता जस्ट वांट टू टेस्ट इट गुड अभी जो यहाँ की मोस्ट हैपनिंग थिंग है वो है यहाँ की फिल्टर कॉफ़ी वो हमने ऑर्डर की है बस जस्ट आने वाली है 2 मिनट्स में तब तक हम इसको फिनिश करते हैं और टेस्ट करते हैं कोकोनट चटनी टोमेटो चटनी एंड दिस इज सांबर वाओ दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ फूड if you are in South India and this is our filter coffee oh so warm but the way to drink is like you have to थोड़ा सा इसमें डालना है ऐसे ताकि जल्दी से ठंडी हो पाए और इसको ऐसे रखो कितना ही आता क्वांटिटी को you have to drink first कितना ही आता है then pour it up again రెండు तो मनवानी है ना तो it's super strong actually yeah अनु raise it up इसका गरम गरम बहुत गरम है now you can drink நான் குடிக்கிறேன் ஆறிடு போல இருக்கேன்
Yeah, mix करने you must try it out अंदर नीचे here रहता है, only at mix Rathna करना। Cafe. This filter coffee, Cafe, yes. which is you can say this is a delicacy of South India. North India में भी पी है मैंने बहुत बार, पर ये वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लिख के ले लो। हमारे साथ है लोकल तमिल ब्लॉगर, फिर जो पे टेस्ट करेंगे बताएंगे, क्योंकि ये इनका प्रॉपर साउथ इंडियन फूड है रत्ना कैफे में, और ये मुझे थोड़ा सा इन डिशेस के नाम भी बताएंगे, साथ साथ टेस्ट करेंगे, और वो भी इनकी अपनी लैंग्वेज तमिल में। இது வந்து சாம்பார். ஓகே. हाँ ரசம், கார குழம்பு, கீரை, சம் கூட்டு, பொரியல், हाँ புளிசோறு, राइस लुकिंग नाइस, மோர், लस्सी, ஓகே. कर्ड, We'll start from sweet, yeah. இதெல்லாம் எடுத்து இப்படி வச்சிடணும். இப்படி வச்சுட்டு ரைஸை போட்டுட்டு we'll start from சாம்பார். ஓகே. मिडवे बीच में बीच में आया मजा गुड. என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Can you try? Yeah, I want to try. And also they gave me permission to put my sticker here. So yeah, please guys, you also do the same. Please subscribe to my YouTube channel. Guys, we are at बेसन नगर बीच, और हम लोग अभी थोड़ा सा लेट हो गए आते आते, जब देखिए जब थोड़ा डार्क भी हो गया है. प्लान तो था इवनिंग में पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए, क्योंकि हम मॉर्निंग में हमारा जो प्लान था वो था हम महाबलीपुरम गए. थोड़ा सा लेट तो है, बट अभी भी जो एरिया है ये बीच वाला जो मार्केट एरिया है ये बहुत लाइवली और हैपनिंग लग रहा है. तो सर्चिंग की कुछ खाए यार, पहले भूख लगी है. स्ट्रीट फूड जैसा देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे. एक्सप्लोरिंग स्ट्रीट फूड. फाउंड अ शॉप जहाँ पे हमें मिलेगी मड कॉफ़ी. यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टाइम नाम मड कॉफ़ी, तो हमने सोचा वी शुड ट्राई इट आउट. एंड ऑल्सो दिस स्प्रिंग पोटैटो, ये तो डेकोरेशन में है. शी इज कुकिंग, मतलब थोड़ा सा फ्राई करके ऑयल में कुक किया जाता है, एंड दैट विल लुक सो डिलीशियस. सो वी ऑर्डर्ड 1 स्प्रिंग पोटैटो, 1 मड कॉफ़ी. Divya, so this is the only shop where we can get mad coffee? This shop, this place only one. Okay, another place, another one coffee. Okay, okay. Marina Beach also we can find? No, Marina Beach, no coffee. No coffee. This is Banaras Beach. Okay. Okay, Banaras Beach. First light, big light, straight you come. Spring potato. Yes. Spring potato, mud coffee. मड कॉफी. Yes, you can see the name. ये बैनर है, आप इसको देख के आ सकते हैं. मड कॉफी आपको कहीं नहीं मिलेगी. This is the only place in बेसन नगर बीच where you can get mud coffee. You can see how they are preparing this mud coffee. एक केटल है, इसको गरम रेत में लगा के they are preparing. And also here is our कौन सा पोटैटो था? Spring. So here is our spring potato and coffee. Coffee तो मैंने already half finish कर दी है. रियली वेरी टेस्टी. हम इसको वैसे कुल्हड़ वाली कॉफ़ी बुलाते हैं, पर ये मड में जो इनका स्टाइल था ना बनाने का, दैट वाज रियली एन अमेजिंग. और ये बहुत टेस्टी है. भाई दूसरी स्प्रिंग है खाने वाली. हम लोग ये कॉफ़ी एंजॉय करके अब जाने वाले हैं अपने घर, वहाँ पे स्टे करेंगे. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. यू हैव टू सी दैट वीडियो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है. So you just get connected with me for that video. It's time to say goodbye to you because we have already spent 3 days in Chennai, and it was really beautiful days for us. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye.